हेलो एंड वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट। भाई 1.5 दिन में 1.5 डेज में मैच खत्म, टेस्ट मैच डन। दिस इज द फास्टेस्ट टेस्ट मैच वी हैव सीन इन क्रिकेट हिस्ट्री सिंस टेस्ट मैचेस आर स्टार्टेड। इतना जल्दी इन टर्म्स ऑफ ओवर्स कभी मैच खत्म नहीं हुआ। मेरे को तो नहीं पता था कि भाई डे 2 लंच टाइम के बाद ही, मतलब जस्ट बिफोर टी, मैच खत्म हो जाएगा इतना जल्दी। पिच मेरे हिसाब से, अगर उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, इट वाज नॉट द आइडियल पिच। जैसा इंडिया में ब्लेम होता है रैंक टर्नर्स के लिए, वो भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि द होम टीम शुड हैव देयर कंडीशंस एंड एवरीथिंग। आई थिंक सेंचुरियन वाज मच बेटर बिकॉज उसमें सेंचुरीज भी लग रहे थे, हंड्रेड्स भी मार रहे थे, एल्गर ने मारा, केएल राहुल भी मारा, वो बेटर पिच था। ये जो भाई, आई नो मार्करम स्कोर्ड 100, मगर उसमें भी ड्रॉप कैच था and बहुत आउट ऑफ स्किन खेला था। लेकिन अगर आप देखें इन जनरल, इट वाज अ पिच विच इज अप एंड डाउन, अनइवन बाउंस डे वन से, और बहुत मुश्किल था। मगर आई थिंक द गुड थिंग अबाउट द इंडियन टीम, वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, वो बस बोल रहे थे कि भाई जब आप इंडिया आएंगे जब कंप्लेन मत करिए, एंड विच इज राइट। जो आपके कंडीशन देना है दे दो, और हम खेलेंगे। आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली फाइन, एंड इंडिया वोंट आर्ग्यू विद दैट बिकॉज उनके होम कंडीशन उन लोग भी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए ये सही है क्या? लेकिन टेस्ट क्रिकेट 5 दिन चलना चाहिए। इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, आप इंग्लैंड में देखो, जो एशेज अभी हुआ था समर में, इतना अच्छा कॉन्टेस्ट था। इसलिए था कि भाई वहां पे विकेट्स भी मिल रहे थे, पहले दिन पे रन्स भी मार रहे थे, और 5th डे तक जा रहा था, और 5th डे पे भी बैट्समैन भी इन्वॉल्व थे, बॉलर्स भी इन्वॉल्व थे, परफॉर्मेंसेस दोनों तरफ से हो रहा था, और इसलिए मुकाबला ज्यादा दिलचस्प था। इट वाज मोर एंटरटेनिंग, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट द पिच कि भाई या इट शुड लास्ट एटलीस्ट 5 days, एंड दिस शुड बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। लेकिन अगर हम मैच के बारे में बात करें तो जसप्रीत बुमराह आज भाई पूरा मैच पलटा दिया। इनक्रेडिबल स्पेल। आई थिंक द वे ही बोल्ड, लीड लेने से पहले 3-4 विकेट चले गए थे साउथ अफ्रीका के, एंड प्रेशर आ गया था उन लोग पे, एंड उसके बावजूद जो एडन मार्करम इनिंग खेली, ही एटलीस्ट पुट ऑन अ स्कोर एंड मेड इंडिया कम आउट टू बैट। बेहतरीन बैटिंग, उसके आधे से ज्यादा शॉट्स अगर आप देखें गली और पॉइंट रीजन से लिया, और जब भी फुल आया वो कवर ड्राइव पे मार रहा था। It was a very good innings from him. I think one of the best Aiden Markram innings I've seen. One of the best test innings in a long time, because आप देखो जो conditions थे बहुत मुश्किल थे बैटिंग के लिए, very very difficult to bat on. Despite that, वो जो runs मारा था, जो पारी खेला Aiden Markram, I think hats off, salute to him. But unfortunately he didn't get support from the other end, and ये पिच पे तो डिफिकल्ट था। बुमराह हिटिंग दैट लाइन लेंथ, उसने बैटिंग हमको जल्दी आउट कर दिया। फिर उसके बाद गॉट इनटू द टेल एज वेल, एंड वो प्रीटी मच वाइप्ड इट आउट। मगर हाँ, इंडिया में है थोड़ी सी तकलीफ, जैसा इंडिया ऑल आउट हो गए थे, 6 विकेट 0 रन, ऐसा नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका फिर भी फाइट कर रहे थे। रबाडा और मार्करम का जो पार्टनरशिप था 50 रन का था, तो देर वॉज अ बिट मोर फाइट फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन टेल कंपेयर टू द इंडियन टेल। एंड मैं वही बात करता हूँ कि अगर 150 टारगेट हो गया था, 150 160, इंडिया के लिए मुश्किल बहुत हो सकता था, बिकॉज दे स्टिल लॉस्ट 3 विकेट्स। रोहित शर्मा का ड्रॉप कैच भी हुआ था। जब इंडिया आई बैटिंग करने के लिए, काफी एग्रेसिव खेले, मोर T20 क्रिकेट, बिकॉज ये पिच पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इट वॉज द राइट अप्रोच, मगर आप देख सकते हैं तकलीफ हो रही थी। इट वॉजंट ईजी। श्रेयस अय्यर भाई कैसा बच रहा था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जो भी वो 4-5 बॉल खेला, इट लुक लाइक ही कुड हैव गॉट आउट एनी सिंगल डिलीवरी। तो अच्छा था कि स्कोर कम था, एंड दैट्स थैंक्स टू जस्ट बुमराह। आई थिंक सिराज बुमराह वर आउटस्टैंडिंग फॉर इंडिया। एंड आप पहला टेस्ट हार के ये सेकंड टेस्ट जीते, सो बहुत बड़ी बात है। इट्स गुड। ठीक है, यू डिडंट कॉन्कर द फाइनल फ्रंटियर, अभी भी देयर इज अनफिनिश्ड बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। लेकिन ओवरऑल आई फील दैट it was a good comeback, especially when you lose like that, to come back strong and perform like that. And the pitch was extremely difficult. इतना मुश्किल पिच था। आप 55 पे ऑल आउट करे, उसके बाद आप फाइट करे एंड डोमिनेट करे गेम को। अगर पहले इनिंग में साउथ अफ्रीका 150 160 मार दी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता था इंडिया के लिए ऐसे पिच पे। तो दे टुक ऑल देयर चांसेस। ठीक है, आज मार्कम ड्रॉप किया, मगर मार्कम को ड्रॉप करे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। एंड नाउ एवरीबॉडी सेइंग कि भाई तीसरा टेस्ट लगाना था, मजा आता था, वनडेज नहीं रखना था। हम तो पहले से बोल रहे कि भैया there should have been a third test. Test cricket को अगर जिंदा रखना है, you want matches like these, you want competitive, I mean not matches in terms of 2 दिन में खत्म होना, मगर you need competition। 1-1 है, तीसरा रखना था, फाइनल टेस्ट रखना था। मजा आता था। और साउथ अफ्रीका ऐसे कंडीशन है कि भाई रिजल्ट तो पक्का ही पक्का है मेरे हिसाब से। तो
I think it was a good series. दोनों teams जीत एक एक जीते, and just sad that there was no third test match over there. From India's point of view also, अगर आप पहली इनिंग ले लें इंडिया की बैटिंग में, आप बिफोर दैट collapse जो रोहित शर्मा बैटिंग की और विराट कोहली became very useful in the end, because जो 98 रन का लीड था बहुत valuable lead था, and that's why target कम था. If it was like a 30 run lead or a 40 run lead, फिर आप शायद लास्ट इनिंग में 150 चेस करना पड़ता था, and it would have been very very difficult in these conditions. So credit goes to them as well. I think today Virat Kohli थोड़ा unlucky dismissal था. रोहित शर्मा was a bit lucky, but आप देख सकते हो उसका passion, उनका excitement जब मैच जीते, because it's tough conditions, tough match था. आप ऐसे तरीके से मैच जीते तो फिर खुशी तो होती है obviously. And yeah, I think it's unfinished business, but they will take the positives out of it. They came back well. It was good. They showed good mentality. I think मुकेश कुमार आना उसने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया. He made sure कि भाई प्रेशर था, एंड ही वाज वन ऑफ द रीजंस कि आप वो प्रेशर मेंटेन करके साउथ अफ्रीका को 2 बार जल्दी आउट करे. नहीं तो शायद they wouldn't have been able to maintain that, and maybe Shardul was leaking more runs which he did in the first test match, and it would have been very difficult for you going on. यहाँ पे अगर लीक करे तो भाई मैच खत्म था, because अगर आप देखो हर बॉल पे विकेट जा सकती थी. इवन जब जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, आप देखो दे मूविंग आउटसाइड द क्रीज, ये वो अनकंफर्टेबल थे. बॉल मिडिल नहीं हो रहा था ऑल द टाइम. 2-3 क्लास शॉट्स थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट ऑन. इतना इजी था नहीं मेरे हिसाब से. And so I think it was good that they went with that fast bowling thing, and it showed कि भाई ठीक है बैटिंग वीक थी, लेकिन अगर आप 12 विकेट जल्दी लिए आप मैच वैसा भी जीत सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग लॉन्ग, बैटिंग डीप. दैट्स नॉट द ओनली थिंग. आई थिंक you should look at it. पिच के बारे में रोहित शर्मा भी, लेकिन उसने बोला कि भाई देखो अगर आप ऐसे पिचेस डालेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आके खेलेंगे, लेकिन फिर आप you should shut your mouth when you come to India over there, because हम लोग भी वैसे पिचेस बनाएंगे एंड व्हाटएवर. एंड ही हैज अ आई थिंक पॉइंट. अगर आप देखें ठीक है, मेरे हिसाब से he is ready to play on these pitches. That's very good, but also the fact is कि अगर आप ऐसे pitches रखेंगे फिर इंडिया में भी आप रख सकते हैं ऐसे pitches, and वहाँ पे तो उन लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं. लेकिन is it the best thing for test cricket, ये देखना पड़ेगा, right? Like if it's helping cricket, maybe it is entertaining. ऐसा नहीं है कि हम लोग ये दो टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा entertaining था, I don't think बोर हुए. But टेस्ट क्रिकेट मतलब 5 दिन, उसमें ब्रॉडकास्टर भी का लॉस है. अभी कल परसों तरसों ना एड्स चलेंगे, ना लाइव चलेगा, ना लाइव शो रहेगा, ना स्टूडियो रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा नेक्स्ट 3-4 days. सो दे गोना लूज अ लॉट ऑफ मनी. टिकट सेल्स अभी डे 3, 4, 5 खत्म, डे 2 ही आप अगर पैसे खरीद तो आप पूरा पैसे वसूल नहीं हुए, बिकॉज इट वॉज फिनिश, द गेम वॉज डन. आई थिंक लंच के बाद खत्म हो गया था मैच, राइट? तो proper losses हो रहे हैं like test cricket में. So and that is, you have to blame the pitch over there. It is not fit enough for test cricket. And the same thing goes, अगर आप ये स्टैंस यहाँ पे रख रहे हैं तो फिर आप इंडिया में भी यही स्टैंस रखना पड़ेगा. एंड फेयर टू रोहित शर्मा, उसने बोला कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खेलूंगा, मगर वहाँ पे भी आप खेलो. तो ही इज सेइंग कि आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दीस पिचेस, but you shouldn't have problems with our type of pitches. And that is, I think, a very fair statement from Mr. Rohit Sharma. uh, so it was a good point over there, and I'm sure he's a bit relieved as captain. मतलब finals हारे हैं आप, WTC भी finals हारे, World Cup finals, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच हार गए. He was looking down, he wasn't looking up for it, but still managed to get the job done with his players. And yeah, Jasprit Bumrah, I think right now, in terms of all format, he is world class, man. T20 one-day test, I don't know if there's a better bowler than him. He's just outstanding. Any ball you give him, any format you give him, is incredible. उस हिसाब से वो डालता. T20 में आप देखो यॉर्कर, वन डेज में वो मिक्स करता, स्लोअर बॉल भी आके डालता. टेस्ट में immaculate length and line, very good pace, or constantly beating the batsman. I think it's a proper test bowling when Bumrah bowls. और उसका action awkward है, हम लोग नहीं समझ सकते कि बुमराह टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है. लेकिन जिस तरीके से he's adapted to all three formats, I think he has to be the best bowler in the world. You can talk about Pat Cummins, you can talk about Shaheen Shah Afridi, but overall, if you include one day T20 tests, all three formats, I think Bumrah, there is none better than him. He's a
ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर एंड ही इज़ बीन सेंसेशनल. मोहम्मद सिराज के बारे में बात करें तो भाई अपना हैदराबादी इनक्रेडिबल बॉलिंग. ही वाज आउटस्टैंडिंग अगेन. यस, ही हैड अ बिट ऑफ अ क्वाइट वर्ल्ड कप, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग डाला ये टेस्ट मैच में, ही मेड श्योर कि भाई इंडिया विल विन दिस टेस्ट मैच. मैच वहीं ख़त्म किया जब जहाँ पे 55 ऑल आउट करे. एक आध बॉल ठीक है, लाइक ही वाज अ बिट लकी डाउन द लेग साइड जो गया था, लेकिन अदरवाइज टू द लेफ्ट हैंडर टू द राइट हैंडर ही वाज इक्वली लीथल. He was hitting his lines and lengths. He was very consistent also. And इन लोग speed अच्छा रख रहे थे दोनों. सिराज बुमराह especially, they were keeping good speeds and they were getting backed nicely by मुकेश. प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात करें तो I don't know if it's the injury or lack of experience. Of course, he looked the weak point. आज ये मैच में भी, आज भी अगर आप देखें फुल टॉस दे रहा था टेलर को, he was not hitting. You took him in the team so he can hit that middle of the pitch and hit that spot good length, and we've seen him do that before his injury. मगर अभी since he's come back, he's been very poor. Ireland में थोड़ा बहुत देखे, लेकिन apart from that, he's been very poor. Pace भी नहीं दिख रहा. लेंथ लाइन भी वेवर्ड है उसका, तो उसको वर्क करना पड़ेगा अपने गेम पे. ही विल हैव टू वर्क ऑन हिज गेम एंड मेक श्योर ही improves it, because you expect more from your third, fourth bowler, and you need them to sustain the pressure. Of South Africa को देखे, the way after Rabada and Berger bowled, Ngidi and Jansen backed it up, right? उन लोग भी wicket taking opportunities के लिए रखे. It also gives your opening bowlers a rest, takes pressure off them, and also it puts more pressure on the opposition कि भाई ये खत्म हुआ, ये भी शुरू हुआ, we can't, like, there's no way out. ऐसा माहौल अगर आप बना दिए तो इसलिए, like, third or fourth seamer बहुत important रहता है. And I think Mukesh was outstanding, and that was one of the reasons India won the test match. Apart, of course, Siraj, Bumrah are the main reasons, lekin he's one of the reasons. And I think also Prasidh Krishna will have to work on that. I think he'll have to work on his fourth, on his bowling, especially in test matches. Uska pace bhi kam dekh raha, he's not looking lethal at all over there. Now, abhi ये खत्म हो गया. T20 सीरीज है इंडिया अफगानिस्तान, so there is plenty of cricket on offer. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में बारे में बात करें तो वहाँ पे बारिश हो गई. There was like a storm coming in, so before it came in, they wrapped up the game. Australia have lost 2 wickets, लेकिन अभी भी they are trailing Pakistan. फिर से ड्रॉप कैच हुआ भाई. I know Warner got out in the end, लेकिन फिर से ड्रॉप कैच हुआ. फनी इंसिडेंट ये था कि सलमान आगा went to the bathroom for a break, और वो सेकंड स्लिप पे नॉर्मली रहता है और बाबर फर्स्ट स्लिप पे. So because he went to the bathroom, Saim Ayub went into first slip and Babar went to second slip, और बॉल सीधा फर्स्ट स्लिप पे आया. वेरी सिंपल कैच उसने छोड़ दी, बट thankfully for Pakistan, it didn't cost them too much. They managed to get the wicket of Warner. Now कल जो है उन लोगों को ये करना पड़ेगा, try to get wickets early. Try to get the Smith, Labuschagne, all these guys quickly so that they can get into the tail and try to get some sort of lead. अगर पाकिस्तान थोड़ा सा lead भी ले लिया तो बहुत अच्छा रहेगा. Even a draw would be okay, but they're not going to go for that. They'll have to go for the win, put pressure on Australia. Australia will look to keep batting. It looks like a good batting deck. Let's see what happens on day 3. I think day 3 will still hold up. At day 4, day 5, it might start cracking. Then अगर ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गया, फिर नेथन लाइन ये वो खतरनाक हो सकते हैं. इसलिए इट्स वेरी इंपेरेटिव फॉर पाकिस्तान टू pick up quick wickets and get a lead, some sort of lead. अगर आप जल्दी लीड ले लिए तो फिर आपको थोड़ा सा गेम में आने का स्कोप है. नहीं तो बहुत मुश्किल आता है भाई. ऑस्ट्रेलिया में आप देख चुके हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट to win matches. So that's what they have to do. अब ये देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया अफगानिस्तान का जो सीरीज है उसका जो स्क्वाड अनाउंसमेंट रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी crucial, because अभी आप वर्ल्ड कप ईयर में आ गए. 2024 है. You have the T20 World Cup in June. You don't have much preparation time as a team. ठीक है, आप IPL खेल रहे हैं, वहाँ पे आप T20 क्रिकेट खेलेंगे, फॉर्मेट वही होगा, लेकिन एज यूनिट इकट्ठे नहीं खेलने वाले हैं. तो दिस अनाउंसमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. कोहली रहेगा, रोहित शर्मा रहेगा, नहीं रहेगा. इफ दे नॉट इन द टीम, दैट मीन्स कि भाई शायद आईपीएल के बाद पिक होते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है. केएल राहुल रहेगा, नहीं रहेगा, ईशान किशन किधर है, काफ़ी सवाल आ रहेंगे. एंड इंडियन टीम के साथ हर वक्त सिलेक्शन में ड्रामा रहता, वो रहता. 3 सिलेक्टर है भाई अभी साउथ अफ्रीका में. दैट मीन्स देयर समथिंग कुकिंग देयर. कुछ बड़ी चीज़ है, कुछ खबर आने वाली है. देयर समथिंग देयर, इधर देयर
arguing on who the captain is going to be, or they're arguing on, well, do Rohit Sharma and Virat Kohli both fit in the squad or don't fit in the squad. There is something there, because along with the two selectors, maybe you have one for India A, one for India, but then the chief selectors also arrived. Ajit Agarkar उन्हें भी वही हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे पकड़ा. We don't know exactly क्या खबर आने वाली है, लेकिन there is something going on in South Africa. I'm sure they'll be pleased कि भाई at least जीत गई है test match. They've won this test match. They have a victory under their belt. But I think now, because it's a T20 World Cup year, all the focus will be on the squad selection, and it'll be very important to see कौन select था कौन नहीं होता. You've been playing with a different type of unit एक साल से, because the focus has been on the One Day World Cup. Do you still stick with that unit, or do you change it up? Championship of India has been starved of an ICC trophy for such a long time, so everyone wants a squad that can pick them. और यही रहेगा कि भाई आप जिस तरीके जाते हो, criticism तो रहेगा. अगर आप कोहली को और रोहित शर्मा को लिए तो क्रिटिसिज्म रहेगा, नहीं लिए भी तो क्रिटिसिज्म रहेगा. तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हिच वे दीस सेलेक्टर्स गो. It'll be very interesting to see how that goes. So that will be announced, I think, आज शाम में या कल तक पता चल जाएगा आपको कि भाई क्या exactly क्या scene in terms of the T20 thing. And yeah, talking about India South Africa, I think Dean Elgar के बारे में भी बात करना पड़ेगा. A shout out to him. I think outstanding career, the grit and determination he's shown, especially for the long format, incredible. I think Jack Callis or Herschel Gibbs के बाद he has the highest average in South African conditions, and you've seen how tough these conditions are. More often than not, they're like this. Maybe not the same as today, लेकिन in general बहुत मुश्किल होती है बैटिंग के लिए, और वो ओपन करता है. You've seen how many bruises he's taken over the years for South Africa. जब भी teams आते हैं वहाँ पे, he's the one who's standing tall over there, scoring runs, building a partnership, making sure that his team is fighting. वो कप्तानी भी किया था ये सीरीज में, उससे पहले भी he was captain before Bumrah. I think we have to shout out to him. Warner का भी करेंगे tribute, लेकिन because ये मैच खत्म हो गया. Dean Elgar, I think there's a nice scene. Virat Kohli gave him jersey as well. Rohit Sharma the presentation सब sign करके उसको दिए, and he's, I think, underrated. अगर आप देखें, like he's had some really good performances away from home also. Australia में जो Elgar batting किया था, and in general अगर आप ये conditions में South Africa में अगर आप 48-49 average कर दे, मतलब you're some good player. So all the best to him, the best wishes, but I had to congratulate him कि इतना ज़बरदस्त performance has been for him. It's been a very good career. Obviously he would want to win this series as captain and as player, लेकिन वो नहीं हुआ. But it's all right. I think still the way he's competed, especially against India in the last two tours, fabulous, man. पहले टेस्ट मैच में भी ये सीरीज में it was an outstanding 100 from him. He kept India at bay and won the test match for South Africa. And that is the situation. अगर बिग बैश के बारे में बात करें, आज हॉबर्ट जीत गए 6 विकेट से. They beat Melbourne Renegades. So that is also going on. अभी I think ये टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, you might see more Australian players taking part. मेरे हिसाब से I don't know if they have a tour, लेकिन अच्छा हाँ वेस्ट इंडीज आ रही है तो मे बी यू डोंट सी देम. अगर गैप है बीच में तो दे माइट कम, बट बिग बैश भी चल रहा है. एंड फिर अब पाकिस्तान जाएंगे, न्यूजीलैंड को, वहाँ पे T20 रहेंगे. इंडिया खेलेंगे अफगानिस्तान से. तो T20 पे फोकस शिफ्ट होगा, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए. दिस वाज अ गुड पीरियड ऑफ टेस्ट क्रिकेट. अनफॉर्चुनेटली we should have got more. It would have been great to have a third test for India South Africa especially. It was a competitive series, but yeah, the focus will be shifted to T20 cricket. And I think just for a period for India, फिर उसके बाद 5 टेस्ट खेलेंगे इंग्लैंड से. तो there will be test cricket again, don't worry. वो इंडिया में होगा 5 सीरीज. वो पहला हैदराबाद में है टेस्ट मैच, and then they'll move to Vizag and so on. So they'll have to make that shift from T20 to test cricket and then back to T20. But a lot of focus will be on that. अब England will come to India. They will have to expect rank turners. अब इंडिया बोलेंगे कि भाई हम लोग 1.5 दिन का मैच इतना अनफिट पिच पे खेले और जीते, आप खेलो अब. एंड इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर इंग्लैंड. उनका स्टाइल कैसा रहेगा? बेन स्टोक्स इज अ गाय, ही वांट्स टू विन. व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स विल ही मेक? बिकॉज इफ यू जस्ट अंधा आप घुमाएंगे इंडिया में, मुश्किल होगा. अंधा इन द सेंस दैट इवन इफ यू प्ले basketball, you have to have a method, or you have to have mentally prepared. I think you can attack. It's not like you can't attack. You can attack against Indian spinners, because if you switch the narrative, अगर आप खाली survive करते गए
तो आप वहाँ पे भी फंस जाएंगे. इंग्लैंड वो करके देख चुके हैं कि भाई yes they won one test match in India but they lost the series because they tried to survive. So you will have to attack but it's not going to be easy. जडेजा अश्विन भाई अलग बीस्ट होते हैं और उन लोग ऑलरेडी क्रिकेट खेले नहीं. अगर आप देख लो फिगर्स जडेजा और महाराज के ये पूरे मैच के 0 ओवर 0 रन 0 मेडन 0 एवरीथिंग इकोनॉमी 0. तो they're dying to bowl especially Ashwin and Jadeja. So and it's going to be a big uh, challenge for England. Pitches तो मुश्किल होंगे उनके लिए. They've also prepared with spinners. They've also packed their team with spinners, and I'll be interested to see how their batters approach. How Ben Stokes leads this side. Zach Crawley खेलेगा कैसा खेलेगा. I mean, they were fabulous in Pakistan, मगर वो pitches अलग थे. ये pitches बहुत अलग होने वाले हैं. This is going to be a completely different challenge against Ashwin and Jadeja, and I think India will go with Kuldeep Yadav as well. They should go with Kuldeep bhai. He should be in the squad. Akshar Patel could also be in the squad. So India will probably stack the spinners and put pressure on England, and there will be pressure on India too. अभी देखना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे और पुजारा इन लोग रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो will they be selected in this test squad? Maybe not because India is looking to move forward. अगर आप वापस उन लोगों के पास चले गए तो that might be a step backwards. Although they haven't like the likes of Shubman Gill, Shreyas Iyer, Jaiswal haven't really lit up the test arena. Lekin I think you'll have to back them now. Ab ek baar chale gaye future mein, you'll have to stick with them and back them, and hopefully they can come good. I think Shreyas Iyer का मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है ओवरसीज होने. ठीक है शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुआ, लेकिन आप हर डिसमिसल देखो उसमें शॉर्ट बॉल इन्वॉल्व था एंड ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इट. The ball might have not got him out, but it set him up. It set him up so much and it freaked him out. I think that he lost his wicket. तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा. आई थिंक इंडियन कंडीशन में वो संभाल लेगा because he's a very good player of spin. So actually in the England series he might be one of the top players for India. But overseas अब आपको एंड ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया भी जाना है. आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड भी जाना है. तो फिर श्रेयस अय्यर वहाँ पे वो कंडीशंस में जहाँ पे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होगा, निप होगा, कैरी होगा, will he be able to live up to the task? Because मेरे लिए तो बहुत बड़ा सवाल है. It's not just his dismissal, it's the lead up to his dismissal which is worrying me more than anything. Will he be able to sustain that performance जो subcontinent में लेके आया वो? Will he be able to do it in in Sana countries? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा भाई श्रेयस अय्यर का. I think we haven't seen anything that has given us that confidence कि भैया यही player है, he's the guy to do it for them. So that's why there will be a key eye on the Ranji Trophy also. Pujara on Pujara Rahane pe, there will be an eye on them how they're performing Ranji Trophy. उन लोग कैसे performances their form में है नहीं है, because there is a chance if these guys don't perform they come back into the team. और 5 टेस्ट मैच का सीरीज है, लंबा सीरीज होगा इंडिया और इंग्लैंड का, तो there is always a chance they might come back. But yeah, वही है खबर आज का कि इंडिया जीत गई सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ. They have won and they've made it 1-1 in the series. We would have loved to see a third test match. Unfortunately, that's not the case. A lot of talk on the pitch कि भैया pitch ऐसा क्यों रखे? Why was it so difficult for the batsmen? Why didn't they last at least 2 or 3 days? There will be a lot of questions asked, I think, because जब इंडिया में होता है ऐसे मैचेस लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा ये क्या पिच है, डॉक्टर कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए. तो ये there is a lot of questions out, but I think more than anything India won, so they've silenced the critics in that way. लेकिन वो final frontier जो है वो अभी they haven't completed that. They have not won a series in South Africa. They've come to win, so they won't be so happy, but they will be satisfied at least that they got a draw. And of course no one wants to come for a draw, they want to win. Lekin they will be happy कि कुछ ना कुछ they've bounced back, they've shown some character, they've shown strong belief. And मुश्किल pitch पे ऐसे condition में easily India रैप हो सकते थे, मगर उन लोग रैप करा दिया. And that first inning Siraj did the trick for them. I think for me man of the match is MARKRAM. I know Siraj, Bumrah were outstanding, so was Rabada and Giddy. लेकिन to score 100 ऐसे conditions में भाई too much, बहुत मुश्किल है. I know Sunriser है तो मैं bias भी हूँ, लेकिन to score 100 in those conditions was next level from MARKRAM. तो मेरे लिए वो man of the match है, but it was Siraj and Bumrah who won India the game. And man of the series मुश्किल है. I don't know exactly. People will have different
options, I think, who will you give man of the series to? It's a tough one. I think I can give it to anyone really. Like, it wasn't one stand-up performance. In the first test, it was Elgar. In the second test, Siraj, Bumrah. You could give it to either one. But yeah, overall, it was a very competitive series. बहुत मजा आया. अभी देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कैसा मैच रहेगा, how that's going to go down. तो पाकिस्तान still in the game. ऐसा नहीं है कि they haven't think, but they'll have to pick up wickets and catches लेना जरूरी है भैया. आप ऐसे नहीं छोड़ सकते catches जैसा कल छोड़े. I know वो bathroom break हो गया था बीच में ये वो, but they have to be more disciplined in the field. They have to take the chances because Australia बहुत unforgiving जगह है भैया. वहाँ पे आप छोड़ दिया. They're lucky that Warner didn't go and score 100. I'm telling you, नहीं तो normally he punishes people if you give him chances. So they'll have to be very prepared and they'll have to take the chance. I think Amir Jamal has been outstanding. बेचारा उसका ही कैच ड्रॉप करे थे. साइम अयूब जो फर्स्ट स्लिप पे खड़ा था. Like, I think Amir Jamal has been outstanding. There's a funny incident where एक no ball भी, like, he ran up and there was no ball in his hand. He did this to the batsman. That was also a funny incident. लेकिन हाँ, I think Pakistan will have to take the chance. They have to bowl well early on. पहले सेशन में 3-4 विकेट अगर उन लोगों को उखाड़ से, at least 2-3 विकेट. लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर उन लोग आ गए, फिर उसके बाद they can put some pressure on Australia. If you get Australia 5 down for like 200 or 180 like that, then the game is on. Then the game is in your favor. So it's about taking early wickets, striking early, and taking a chance. If Australia gets some sort of lead, per मैं बोल रहा हूँ line आके फंसा देगा day 4-5 पे. So that's why it's important. Day 3 is normally the moving day in traditional test matches, not like ऐसे जो इंडिया साउथ अफ्रीका का था. Moving day तो भाई पहले ही दिन में move हो गया पूरा. लेकिन यहाँ पे जो है, I think it will dictate the pace of the game, which direction it's going. आपको समझ में आ जाएगा कि this is going to be, it's going to go this way or that way at this test match. I think आज के यही है. It was you would say historic day because it's the first time a subcontinent team has won in Cape Town. Fortress है South Africa के लिए, वहाँ बहुत मुश्किल conditions होते हैं. आज तो ये टेस्ट मैच तो बिल्कुल ही मुश्किल थे, लेकिन India have won that. They've breached that fortress. अगर आप बोल सकते हैं, पहले गैबा का था, अभी Cape Town, so that's something they can be proud about. Of course, they didn't win the series, लेकिन it's a positive in a place where they don't normally win. They picked up victory and they have sent out a statement then they can win in any conditions. I think that is a positive from Team India. So it's a historic day for them in that sense. And then we'll find out what happens in the T20 selection. वो भी अभी कल परसों में आपको पता चल जाएगा. I think आजकल में ही पता चल जाएगा कि exactly क्या squad है, और वो announcement जब आएगा, we'll come back live for that and we'll discuss the situation over there. But I think that's all for now. Make sure you hit the like button, make sure you hit the subscribe button, and follow Chasing the Target for the latest updates. We'll keep you updated. I think there's a lot of cricket going on अभी. ठीक है, ये तो जल्दी खत्म हो गया, ब्रेक है, बट अब इंडिया अफगानिस्तान का भी T20 सीरीज है. ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड जारी, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड भी है. And then we'll have the Big Bash going on. There's going to be other tournaments going on as well. I see T20 भी शुरू होगा थोड़े दिनों में. So make sure you stay tuned to Chasing the Target. Thank you so much for joining me. Make sure you hit the like button, subscribe button, and see you guys in a bit.